Okay, good morning to all. Good morning. Okay. So last lecture में हमने देखा था basically heat exchangers, how they work. Okay. How the heat exchangers work that we have seen in the last lecture. So हमने देखा था कि क्यों हम बोलते हैं कि heat exchangers are dominated by convection. Okay. क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास जो डेटा अवेलेबल रहेगा that will be in terms of convection. Okay, that will be in terms of convection. Am I audible? Okay. So the data is available in terms of convection. Okay. So इसलिए हमने देखा जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो क्या आ रही है इक्वेशन इक्वेशन जो आ रही है वो है that equation is q equals to UA delta T LMTD. So what is our task? Our task is to improve this. We have to improve the value of q. है ना हमें q बढ़ाना है. Meantime, we have to always increase the u. We have to increase the u value also, as well as area and delta T LMTD. We have two parameters. So area we have to decrease as much as possible, because if we decrease the area, material of construction requirement will be less, so we will save our money. LMTD we have to increase. Okay, so we have seen we have two options. Either we can go for counter current and co-current. Okay, counter and co-current. So we have seen that counter current is better because in ideal case it can reach up to the maximum temperature in the system. Okay, so these are the things which we have to take care while solving this. Okay, q is increased, u is increased, area is decreased, and LMTD is increased. If we follow these parameters, we will get a economical heat exchanger. Okay, if we follow these parameters, we will get economical heat exchanger. Okay. Got it this point? Anyone has doubt? Okay. Anyone has doubt? So what is our task here is we have seen when we are moving towards counter current, the maximum temperature it can reach up to this. And this is the maximum temperature in the system. Okay, that's why counter currents LMTD of counter will be greater than LMTD of co-current.
Okay, and this is our task. See here, LMTD we have to increase. So that is why we will go for LMTD of counter current. Okay, write one question. Hot oil at 150 degrees centigrade is used to preheat a cold fluid at 30 degrees centigrade in a 1 or you can just write in a counter current heat exchanger. The exit temperature of hot oil is 10 degrees centigrade. Heat capacity of the both the fluid are equal. MCP1 is equals to MCP2 and the heat duty is 2 kilowatt. Okay. Under co-current flow, the overall heat resistance is 1 by UA. And second, under counter current flow, the overall heat resistance is solve this question. So the most important point here they have given is this. MCP1 is equals to MCP2. This is the most important point. So we have seen in the previous class that when MCP1 is equals to MCP2, here in counter current delta T1 is equals to delta T2. So you have to calculate that temperature by using that concept.
Okay. So how you will solve? This fluid is moving from 150 to 110, and this one is moving from 30 to 70. So here delta T is 80. Here 70, how I have calculated? See here it is going from 150 110. Exit of cold is not given, but what they have given is MCP1 is MCP2. So to make the delta T1 equals to this delta T2 80, this should be 70. Okay, this value should be 70. So this we have calculated. How? Because we know that when MCP1 is MCP2 in counter current, delta T1 is equals to delta T2. Okay. So for this LMTD will be 80 directly, and co-current you have to calculate. This is counter current. One 50 to 110. Here it is 30 to 70. So here delta T is 120. Here delta T is 40. So LMTD will be 120 minus 40 upon ln of 120 by 40. It will be equals to 72.81. Now co-current system 1 by UA is equals to 72.81 upon 2000. It is given. It is equals to 0.036. Counter current 1 by UA is equals to 80 upon 2000 is equals to 0.04. So check this. Are you getting this answer or not? आ गया आंसर. Okay.
Now give the heading Multipass Heat Exchanger. What is multipass? That is shell and tube heat exchanger. So here, first part will represent shell, the second will be tube. So if it is 1 and 2, it means that one shell and two tubes. Basically, two tubes doesn't mean only two tubes, it is a bunches of tubes, but the pattern and the direction of that all tubes will be two. Okay. Means basically tubes. When we say tubes, they are bunches. Okay. But when they are moving in same direction, this is called as one. If we turn the direction of these tubes, then it becomes two tubes. Okay. So I will explain you from the diagram how it looks. So there will be baffles. Baffles will take care to give the support to the tubes as well as it will responsible for the turbulence in the system. So suppose the fluid is moving here, tube in. This is tube out. So shell fluid will move like this. Shell in. This is shell out. Tube in. It will enter. This is tube out. So if you see the direction of a shell, it is moving in this direction. And it is moving in this direction. So they are counter current to each other. Okay. You can see anywhere here. What it gives idea that this is the diagram of a 1-1 shell and tube heat exchanger. It gives us idea that 1-1 shell and tube heat exchanger will by default always counter current heat exchanger. Okay, because in this shell fluid and tube fluid are moving opposite direction to each other.
Okay, so draw this diagram. Okay. One is always a counter current heat exchanger. And we have seen that counter current is better than co-current. Okay, so that is why shell and tube exchangers are good. That is, this is a single pass. Okay, this is a single pass. Means there is one shell is available, one tube is available. Draw this diagram. Okay. Now we will see multi-pass. Okay. This is the single pass we have seen. This is known as single pass. Now we will see multi-pass. Suppose it is 1, 2 shell and tube reduction. So here one means one shell and two tubes. Okay, so I will draw the diagram. Here the direction of tubes will change. Initially they are moving in this direction. Now from here the direction will change here. So here is the entry of a tube in. Here there is outlet tube out. Now we will see regarding the shell.
There will be waffles. Okay, so shell in. This is shell out. So if you see the direction here, in the upper part, if you see, they are behaving as a counter current heat exchanger. And at the lower part, if you see, both are moving in same direction. है ना? So they are co-current. It means that if we go from single pass to multi-pass, the effect of LMTD will reduce because half heat exchanger is behaving like a half heat exchanger is behaving like a counter current and half it is behaving as a co-current. So overall, if you see, there is a decrease in the effect of LMTD. है ना? Overall, there will be decrease in the effect of LMTD. Have you got this point? Overall, there will be decrease in the LMTD. Okay. Then what is the benefit here? The benefit here is there is a turn. Okay. Tubes are turning and more baffles are used. So they are responsible for the turbulence in the system. Turbulence in the system. And if the turbulence is more, what will happen? Your U is going to be increased. है ना? Overall heat transfer coefficient is going to increase. As turbulence increases, U is going to increase. So more turbulence will occur here as compared to single pass because here there is a more baffles as well as there is a turning of the tubes, and in turning we know that boundary layer separation will take place and that is responsible for a more turbulence. Got this point? Means what is the disadvantage of multipass? That co-current is happening in the system. है ना? Co-current. But what is the advantage?
more turbulence and U is more. So this is a dominating factor here. This is a dominating factor here. Okay. As there is a dominating factor here, what will happen? What will happen? This will be given more preference. That is why we will move towards more multipass heat exchanger rather than one shell and tube heat exchanger. Okay. Got this point? Write this. Write these points. So if you compare LMTD, LMTD of 1,2 will be less than LMTD of 1,1. Velocity of 1,2 will be greater than velocity of 1,1. So basically it will try to help to increase our overall heat transfer coefficient. Okay. This is the important factor. So in place of 1,2, you can go to 1,3 also. In 1,3, what will happen? There will be one counter current, then co-current, then counter current. Okay. So this will happen. So that will help to enhance the counter current phenomena in the system. So out of three, two is counter current, one is co-current. So obviously it is going to help in terms of LMTD also. But if you compare with the LMTD of 1,1 is always by default a counter current heat exchanger. It will always be a counter current heat exchanger. So what it gives us idea that we have to always try. Okay, we have to always try to create turbulence. We have to always try to create turbulence in the heat exchanger. The more the turbulence will be created in the heat exchanger, more heat transfer coefficient will be there. Okay. Okay. More heat transfer coefficient will be there. So as the heat transfer coefficient will enhance, that will help to enhance the Q. Well, at the starting of the lecture, I had told we have to improve the LMTD, we have to improve the U value, then only the Q value will increase. So if you are seeing that here LMTD, I'm accepting that LMTD is decreasing somewhat, but U is dominating factor here. Okay, means if LMTD is decreasing by 2 factor, due to this, U is increasing by 5 to 6 factor. So that is the overall effect is positive. So that is why we go for multi-pass heat exchanger. Okay.
Got it? Draw this diagram. Draw this fast. Okay. So when we are calculating LMTD for multi-pass heat exchanger, how it will behave? It is half a counter current. Then it will turn here, here. So it will be very difficult actually to calculate the exact LMTD for a multi-pass heat exchanger. Okay, you can see from this diagram means how we can calculate this, because there are more than two streams. है There are more than two streams means they are turning. So how we will calculate this? So for this we have to take the help of the literature. Okay, for this we have to take the help of literature. There is one term which will be introduced which is known as correction factor, that is F. What is this F? F equals to deviation from counterflow case. Okay. So means if F equals to 1 is given, it means the system is counter current. So here delta T LMTD of 1 2 is equals to F into delta T LMTD of 1 1. 1 1 we can calculate easily. है ना? 1 1 we can calculate easily. So write this formulas. So here, for calculating the F value, we have to take the help of a literature. We have to calculate the two values actually. So they are known as P and R. So P is T2 minus T1, T1 minus T1. And R is T1 minus T2, T2 minus T1. Capital T is shell's temperature and small t is tube temperature.
Okay. So what will happen after calculating the P and R value? There are different graphs which are given in the literature. So depending on that P and R value, you have to calculate the value of your F, and that you have to use in the formula. That is F into Lmtd of 1 1, because 1 1 you can calculate easily. Okay, 1 1 you can calculate easily. So write this formula. Done. Okay. So here there are limitations. Means what are the extreme points of P and R? The value of R ranges from 0 to infinity. If R equals to 0, it means there is a phase change on shell side. And if R equals to infinity, then there is a phase change on the tube side. And the P ranges from 0 to 1. Okay. So P is a normal value, but there is a significance of a R value of the extreme points of 0 to infinity. So if I talk about condenser and boiler, F is always 1. Okay. F equals to 1 for condenser and boiler.
Okay. So got it. What is this LMTD? Okay. So it means that area required will be for 1 2 will be larger, obviously, because we are increasing the tubes. So it means the area required will be larger. But what we are doing is we are improving the overall heat transfer coefficient, and that is very very important. Okay. To solve one question, a counter current double pipe heat exchanger exchanging heat oil to water. Oil is at 100 degrees centigrade and exit at 70 degrees centigrade. Cooling water enter at 40 degrees centigrade and exit at 80 degrees centigrade. Cooling flow rate is 1 kg per second and flow in shell side and oil flows in tube side. If this is replaced by if this is replaced by 1 2 shell and tube heat exchanger, what is the excess area required? U equals to 300 watt per meter square Kelvin. Cp of oil is 200 joule per kg degree centigrade and Cp of water is 4180 joule per kg degree centigrade. The correction factor is 0.5. Solve this. Solve this question. So you have to calculate how much excess area will be required. So first you can easily calculate the LMTD of 1 as correction factor is given. You can calculate the LMTD of 1 2 also.
Okay. We'll solve this. Q equals to mCp delta T. So here it will be 1 into 4180 into 40, 167200 joule per second. So we can calculate LMTD of 1 It is 100, 70, here 80, here 40. So calculate the LMTD of this. Calculate fast. So here the LMTD is coming 24.66. So you can calculate area of 1 is equals to 167200. Okay. Yes, so here 24.66. So here area of this will be 167200 upon 300 into 24.66. So how much it is coming? 22.60. Now you have to calculate the area of 1, 2. So it is 167200 upon 300 into 24.66 into 0.5. है ना? How much it is coming? Calculate. So it is 45.2. So excess area will be, as you can see from here also, it is directly 50%. Okay, so obviously the answer will come 50%. है ना? Means double. So area will be 22.60. है ना? Double area will be required because it is 50% directly. Got the answer? Got it? Right, next question.
A hot fluid entering in a well stirred vessel cooled by flowing cooling water through the jacket. Assume jacket is perfectly mixed. mh equals to 0.25 kg per second. Mass flow rate of cold is 0.4 kg per second. Cp of hot is 6000 joule per kg Kelvin. Cp of water is 4184 joule per kg Kelvin. Inlet and outlet temperature of hot fluid are 150 and 100 degrees centigrade respectively. C in is 20 degrees centigrade. U equals to 500 watt per meter square Kelvin. Calculate area. You have to calculate the area. Calculate this. Calculate this. Q equals to 2.6 thousand into 150 minus 100 will give you, calculate this, 75,000 joule per second. Now we have to calculate the LMTD. But here in this question, calculating LMTD is somewhat different. Why? Sorry. Because in the question they have used two different words. If you read the question, it is clearly mentioned a hot fluid entering in a well stirred vessel. Well stirred is means that stirring is done very good. So when we do stirring,
I think you remember in CSTR we do the stirring. Okay. So whenever we do stirring, what will happen? Whatever will be the outlet temperature. Okay. Whatever will be the outlet temperature will be there. That is the correct value. Okay. That is the correct value. Because in CSTR we know that whatever will be the concentration inside the reactor, it is equals to the outside. Why? Because we are doing a well stirring. So first we will calculate the outlet temperature of cold. Okay. So it will be 0.25 into 6000 into 150 minus 100 is equals to 0.4 into 4184 into x minus 20. So here equals to 65 degrees centigrade. Okay. So what is the meaning of this? And it is also clearly mentioned that the jacket is also perfectly mixed. Means mixing is done. Means mixing is done everywhere perfectly. Okay. So why mixing is done? Here everywhere the temperature is 65. The mixing is done because there should be uniform temperature throughout the system, because we don't know that what is the requirement of the product. Okay, because we don't have to run the system according to the mass flow rate of temperature or the mass flow rate of the hot temperature, hot fluid and cold fluid. What is our important criteria is here it is a reactor. So means here product plays a very important role. What exactly that temperature the system wants. Okay. Uniformity is very, very important. Okay. So if you see this, here the outlet temperature is 65. Okay. And there for hot fluid, the outlet temperature is 100. It means that if the uniform mixing is done, everywhere the temperature is 100. Like this. And at outer side, everywhere the temperature is 65, because both are perfectly mixed. So if you calculate the LMTD from here, what will be the LMTD? LMTD will be 100 minus 65, that is 35. Now for this LMTD, you need to calculate the area. Now you might be thinking that it is not a counter current, not a cross current, not a co-current. So it is clearly mentioned in the question. Okay, they are perfectly mixed. They have not told anything regarding the cross current, counter current, or co-current. So it is a reactor. It is, you can say it is a special type of heat exchanger. Okay, just like evaporator and all that. Here, there will be the exchange of heat, but not according to the pattern which we have studied, that shell and tube. Basically, shell and tube, what is happening? One thing is going in one direction, another thing is going in one direction, and it will help to get whether it is a co-current or counter current. But here it is not a direct heat exchanger. Okay, therefore you can say it as a special type of heat exchanger, and that too they have installed a stirrer, so which make the things different.
Okay. Obviously, if you see any CSTR reactor, there will be stirrer inside that. Okay. There will be stirrer. That is the property of a CSTR. So in CSTR, what we told, whatever will be the concentration outside the reactor, it is equivalent to the concentration inside the reactor. So same thing, whatever the flow rate, outlet flow rate, which is coming from the system, it is equal to the temperature. Whatever the temperature it is coming at the outlet, it is the same temperature which is inside the reactor. Ideally, there may be little bit fluctuations in the real life, but ideally. That also depends upon how you are doing mixing, how much perfect mixing is the stirrer is doing, and all that. There are various factors which on depends. Okay, the speed, agitator, RPM, at what it is running. There are tremendous different ways. Okay. So calculate this area. Tell me what is the answer. So here area is equals to 7,500 into 35. So area is coming 4.28 meters square. Check it. Are you getting this answer or not? Check this. Are you satisfied with the reason why we have chosen LMTD like this? See, LMTD formula is not always like that. Delta T1 minus delta T2 upon delta ln of delta T1 upon delta T2. What is the physical significance of LMTD is we are calculating the mean. So there are different ways from which we can calculate the mean. A plus B by 2 will also give you the mean. Okay. But experimentally, it is found that if something is changing linearly, then logarithmic mean is better than arithmetic mean. Sorry, and geometric mean. Okay. So that is why. So it is not that we have to stick always to that formula. We have seen when delta T1 is equals to delta T2, which is a special case of again counter current heat exchanger. So at that time also, what is that means delta 0 by 0 you are getting. So means you can apply Al hospital rule there mathematically. Okay. And if you see physical meaning is that everywhere the temperature is same, delta T is same everywhere. So why there is a requirement of calculating again a mean if everywhere? What we are calculating mean means everywhere what is the average temperature? Whether it will be when we are calculating like this, suppose it is the answer is coming 24.81, it doesn't mean that everywhere the temperature is 24.81. It may be somewhere 24. It will be between the extreme points 20 and whatever the delta T2 is coming 30 or whatever. Okay. So everywhere approximately the temperature will be like that. So it is well proved by theoretical as well as experimental data. Means scientists have used all methods for calculating the mean. And they have found that whatever the answer given by logarithmic mean is very near to the experimental data. That is why we use LMTD everywhere. Huh? In calculating the area also, in heat exchanger you have seen, in mass transfer also you have seen everywhere.
Got this? Write this all things in your notes. Done? Okay. Solve next question. Water enter at thin walled tube, length equals to 1 meter, diameter equals to 3 mm, at an inlet temperature of 97 degrees centigrade. Mass flow rate is 0.015 kg per second. The tube wall is maintained at constant temperature of 27 degrees centigrade for the following data of water. Density equals to 1000 kg per meter cube. Viscosity equals to 489 into 10 to the power minus 3 Pascal second. Cp equals to 4184 joule per kg degree centigrade. HI equals to 12978 watt per meter square Kelvin. Calculate the outlet temperature of water. Calculate this. Solve this fast.
here we have to calculate the outlet temperature of water. Okay. So here if you draw a diagram, so it will be, see, 97 degrees centigrade. Okay. Here it will be 97. It is clearly mentioned here. The tube wall is maintained at 27. Means everywhere the tube wall temperature is 27. Means one temperature profile is here constant and another one is going. So it is just behaving like a condenser. Okay. It is just behaving like a condenser. What is this outlet temperature? That we have to calculate. Everywhere it is 27. See, means we have seen when the LMTD of counter current is equals to co current, जब LMTD counter current co current के equal होता है, तो मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे पास सिस्टम क्या रहेगा, एक टेम्परेचर प्रोफाइल कांस्टेंट रहेगा. So it is behaving like a condenser. Means one fluid is at 27 degree centigrade and here it will be moving from 97 to some x. It will move. Here it is 27. Here it is. So I have told already that whenever such question will come, it doesn't affect. Okay, it doesn't affect whether it is a counter current or co-current. Okay, so here we can directly use MCP delta T, sorry, UA LMTD. So here M is 0.015 into 4184 into what will be that, 97 minus x, because you can't use 27 na, because it is same temperature. So here U is 12978 into pi dl is given. Then most important thing is LMTD. What is the LMTD will come? Here if you subtract it, it will be 70. So it will be 70 minus x minus 27 upon ln of 70 upon x minus 27. So if you see this equation, in this equation there is only one unknown. Okay, in this equation there is one unknown. Okay, in this question there is only one unknown. So you can easily solve this, or this is a gate question actually. So in which they have given the options A, B, C, D. Different options are given. Second thing is you can use directly trial and error method. You can use directly trial and error method, or you can solve this 70, 27 and one equation will come. In that you have to remove the ln value and your answer will come. What will your answer will come? Check this. So options given are 37, 42, 47, 52. These are the options given. So either you can go with a trial and error method because options are given in the gate question, or by chance because now numerical type questions also comes. So it is not necessary that options are given. So you can try at how to solve this question without option. So basically you have to keep similar terms at one side and you solve it all the terms. Only unknown will be x, because one equation, one unknown. It means you can easily solve it. Obviously, from this calculator, which is a gate calculator, virtual, it is little bit tedious and it will take more time. So when this question is being asked in the gate examination, at that time calculators are allowed. Okay. So, but there is no option. You can't say that the gate can't give such questions now. Okay, they can give. There are some questions every year. Every year there will be some questions which is very easy to solve, but difficult to solve the calculation from that virtual calculator. And what they want is they want to test your patience. Okay, so that is why. So if options are given, better way, go with trial and error method. Okay. So tell me what is the answer is coming. So here, if you solve this, your x will come 37 degrees centigrade.
The most important thing is that you should know that whenever the temperature, one temperature profile is constant, you don't need to worry about LMTD of counter current or co-current, because most of the student will confuse here at which LMTD formula they have to use. They have to go for counter current or co-current. So this you have to remember, okay? This gate has tested this so many times. Okay, done. Okay, okay. Now we will solve some questions regarding fouling, which is very important. We have seen fouling in the last lecture. So we have seen that initially the conduction will occur. Initially the conduction will occur, and after that there will be fouling. There will be fouling side by this. So obviously when the fouling will takes place, it is a conduction. Okay. When the fouling will takes place, it is a conduction. So this is a thickness of pipe. So this is also conduction. This is a thickness of both side fouling will takes place. So this is conduction. But what the scientist has done that, because our overall equation is Q equals to UA delta T LMTD. It means that in terms of heat transfer coefficient, we are writing the our final equation of heat exchanger. So what that the scientist has done, although this is conduction is happening place, I have told last time also, the data will be given in terms of heat transfer coefficient, means in terms of convection. Data in the literature will be given in terms of convection, or you can say better word is heat transfer coefficient, overall heat transfer coefficient. Okay. Means in interview, someone will ask you what is happening there. The answer is conduction is happening place. So why they will ask then why the data is not available in terms of thermal conductivity? If it is a conduction, then data should be in terms of uh, K, because it is satisfying the condition of a conduction that medium is available and it is not moving. है ना? Medium is available and it is not moving. So basically it is a conduction. But to satisfy our the equation, because we want to do heat transfer for the fluids, okay, in heat exchanger. We don't want to do heat transfer for the solids in the heat exchanger. So that is why overall equation can't be changed. So that is why they have changed the data. I have told this earlier also. Once again, I have explained so that now you will be comfortable while solving the question. Solve the question. The overall heat transfer coefficient for a shell and tube heat exchanger is 400 watt per meter square Kelvin. Okay. At time t equals to 0, the fouling factor after 1 year is 2000 watt per meter square Kelvin. The overall heat transfer coefficient at this point is solve this. You have to read the words properly.
that which heat transfer coefficient is given. Okay, let's read the question again. Then we will solve. The overall heat transfer coefficient for a shell and tube heat exchanger means this is a heat transfer coefficient of a clean because it is clearly mentioned at time t equals to 0 means today you have purchased that heat exchanger and the overall heat transfer coefficient is 400. The fouling factor after 1 year. Due to fouling, I have told already, actually it is a conduction, but data is given in terms of U. Okay, but this is the U of a fouling 2000. So what they have asked is the overall heat transfer coefficient at this point. So if I write 1 by U clean, it is the resistance by clean heat exchanger plus 1 by U fouling, it is the resistance due to fouling. So they have asked overall heat transfer coefficient. So first we will calculate the overall resistance. Means resistance by this 1 plus resistance by this 2. So 1 by U is the resistance, we know. 1 by U is the resistance. Okay. So now you can solve this. 1 by 400 plus 1 by 2000. 1 by UF will come 3 into 10 to the power minus 3. So what is the value of UF? 333.33 watt per meter square Kelvin. So this U due to this, don't confuse with this U and this U. See, I will explain once again. This is the individual heat transfer coefficient due to fouling. फाउलिंग की वजह से कितना रेजिस्टेंस है सिस्टम के अंदर, वो ये वाली वैल्यू है. क्वेश्चन में पूछा क्या है, आफ्टर 1 ईयर हाउ मच इज द टोटल रेजिस्टेंस, और उस रेजिस्टेंस को फिर हमने कन्वर्ट कर दिया. उसने यूएफ पूछा, अगर वो रेजिस्टेंस बोलता तो हम नहीं करते कन्वर्ट, इतना ही रखते, है ना. सो आफ्टर 1 ईयर क्लीन की वजह से कितना रेजिस्टेंस है और फाउलिंग की वजह से कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज द ओवरऑल यू. ओके, आगे समझ में. Done. So we will solve more question on the fouling so that you will be confident. In a counter current exchanger which have been in a service for a year is found to be fouled. The heat transfer
reduced by 85% of original value, assuming the terminal temperature are same in both the case. Determine the fouling factor. U clean equals to 500 watt per meter square डिग्री केल्विन। तो देखो, जब भी हीट एक्सचेंजर के अंदर, पहले मैं एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ, जब भी हीट एक्सचेंजर के अंदर फाउलिंग होगी, whenever the fouling takes place, two parameters are going to be changed. First one is exit temperature, है ना, क्योंकि फाउलिंग होगी तो एग्जिट टेम्परेचर जो हमें क्लीन हीट एक्सचेंजर में मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहां पे हमारा मास फ्लो रेट चेंज हो चुका है, अब उसके पास उतनी जगह नहीं बची है, उतना टर्बुलेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा, जो भी चीज है ना। सो एग्जिट टेम्परेचर विल चेंज। सो एग्जिट टेम्परेचर अगर चेंज करता है, इसका मतलब है एलएमटीडी विल चेंज, है ना, एलएमटीडी विल चेंज। दूसरी कंडीशन है हमारे पास कि अगर हमें एलएमटीडी सेम चाहिए, सो मास फ्लो रेट को चेंज करना पड़ेगा। इफ यू चेंज मास फ्लो रेट, okay, if you change mass flow rate, then LMTD will not change. So ऊपर वाले कंडीशन में हम ये भी बोल सकते हैं LMTD will change, mass flow rate will not change. Mass flow rate will not change. Okay, got it? You have two options. Either you can maintain the LMTD. LMTD क्यों मेंटेन करना चाहते हैं? LMTD इसलिए मेंटेन करना चाहते हैं क्योंकि वो जो यहाँ का प्रोडक्ट निकला है हीट एक्सचेंजर से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो किसी ना किसी का रिएक्टेंट होगा। तो अगर वहां पे सपोज करो कि तुम सीआरई की रिएक्शन कर रहे हो और वहां पे बोला गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा फीड आ रहा है, सो अगर ये वही फीड है 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला और तुमने इसको 35 कर दिए, सो रिएक्शन पैरामीटर्स विल चेंज। ओके, दूसरा ये है कि दूसरा ये है कि तुम्हें टेम्परेचर से चलेगा 40 का 35 हो गया चलेगा, लेकिन सीआरई में एक और चीज लिखी रहती है 4 मोल पर सेकेंड, मोलर फ्लो रेट। तो यही है मोलर फ्लो रेट और मास फ्लो रेट। सो बेसिकली मास फ्लो रेट को हम केजी केस में बोलते हैं, उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दिया तो मोलर फ्लो रेट। तो मोलर फ्लो रेट में क्या होगा, मोलर फ्लो रेट भी कभी कभी ऐसा है कि चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां चेंज हो गया तो क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा, क्वांटिटी चेंज हो गई A+B, अगर वहां मोल्स चेंज हो गए सो बेसिकली क्या होगा, वहां पे हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, जितने मोल्स चाहिए रिएक्शन के लिए उतने मोल्स है ही नहीं, तो रिएक्शन पैरामीटर्स विल डिफरेंशिएट। तो ये हमें डिसाइड करना है। अब तुम चाहते हो कि दोनों चेंज ना हो, है ना, तुम चाहते हो अगर दोनों चेंज ना हो, सो बेसिकली क्या करेंगे हम उस केस में, हीट एक्सचेंजर को साफ करेंगे। लेकिन जब तक खराब है, ऐसा तो नहीं है एक ट्यूब अगर खराब हो गई तो फटाक से हमने चेंज कर दिया, क्योंकि किसी भी प्लांट को मेंटेनेंस में डालने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा रहता है। ओके, क्योंकि मेंटेनेंस में डालना मतलब प्लांट को शट डाउन करना है, और प्लांट अगर शट डाउन हो गया तो वो नहीं है 2 मिनट के लिए बंद हुआ, 3 मिनट के लिए बंद हुआ, इट विल बी फॉर ग्रेटर देन 12 आवर्स, है ना, क्योंकि 1200 डिग्री पे रिएक्टर चल रहा है, हीट एक्सचेंजर चल रहा है, उनको ठंडा होने देना पड़ेगा तब ना काम होगा। इट विल नॉट डायरेक्टली कि फैन की बटन सामान बंद किया और काम चालू कर दिया। सो दैट इज वाई मेंटेनेंस डालने से पहले बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। यू हैव टू डू अ वर्क सो मेनी, कि कौन से एक ही बार जब मेंटेनेंस में डाल रहे प्लांट को तो हमें ये कोशिश करनी है कि सारे के सारे इक्विपमेंट जो जो खराब हुए हैं उनको एक ही साथ सुधार दी जाए, है ना। तो मतलब कोई इक्विपमेंट पहले 10% खराब हुआ था तो उसको चला दे, 10% खराब हुआ है ठीक है कोई नहीं होता। सो ये डिसाइड करना है कि वो 10% में चल तो पाएगा, कोई एक्सीडेंटल या फिर कोई हजार्डस तो नहीं है।
तो जो एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत बार वो इसी के वजह से होते हैं, है ना। क्योंकि लगता है कि हमारा जो सिस्टम है वो सस्टेन कर जाएगा उतने इसको, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाता है मेंटेनेंस में डालने के लिए। वन ऑफ द रीजन, दिस इज नॉट द ओनली रीजन। तो उसकी वजह से कभी कभी ये हो जाते हैं, क्योंकि बहुत वर्कलोड होता है, प्रेशर होता है ना मैनेजमेंट की तरफ से। यू हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंपनी को फायदा कैसे होगा। कंपनी को फायदा नहीं होगा तो भाई सैलरी कहाँ से आएगी जो भी काम कर रहा है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू टेक अ डिसीजन, है ना। तुम्हें देखना है, तुम केमिकल इंजीनियर हो, यू हैव टू सी कि मास फ्लो रेट और टेम्परेचर कौन सा चीज ज्यादा इफेक्ट करेगा हमारे सीआरई के उस रिएक्शन को। ठीक है, या सीआरई की नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी सपोज कर लो एब्जॉर्प्शन कॉलम है, कुछ भी है, हम प्री हीटर के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं, है ना? ये सारी चीजें हैं। सो अब क्वेश्चन सॉल्व करो। नाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो बोला हूं उसको सोच के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मारो। सॉल्व करो फटाक से। इस केस में अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि टर्मिनल टेम्परेचर सेम। टर्मिनल टेम्परेचर सेम है, मतलब एलएमटीडी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर एलएमटीडी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ही है यहाँ पे कि मास फ्लो रेट चेंज हो रहा है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू मास फ्लो रेट। ओके, यहाँ पे जो सबसे बड़ा सिस्टम दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट LMTD of fouling is equals to LMTD of clean heat exchanger, है ना, ये दिया हुआ है। सो Q ऑफ फाउलिंग क्या लिखा है, रिड्यूस्ड बाय 85%। 85% से रिड्यूस हो गया तो कितना बचा अभी सिर्फ 1 - 0.85 Q ऑफ क्लीन हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं U ऑफ फाउलिंग into area into LMTD of fouling is equals to UC clean into area into LMTD of clean। ये काट दिए, एरिया का भी कोई डेटा नहीं दिया, ये भी काट दिए। तो ये कितना आ जाएगा, UF इक्वल्स टू 0.15 ऑफ UC। तो UF इक्वल्स टू 0.15 ऑफ कितना आ गया, 500, है ना। मतलब ये है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आफ्टर 1 ईयर। ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 × 500 × 0.15 इक्वल्स टू 1/HF प्लस 1/500। सो ये जो वैल्यू है, दिस विल गिव यू फाउलिंग फैक्टर। कैलकुलेट करो।
कितना आएगा? 0.01133। आ गया? चेक कर लो सारे लोग। देखो, इन डबल पाइप the temperature profile as shown in figure. During the operation, due to fouling, the heat transfer rate is 50% of the original value. Assuming the flow rate and the physical properties, calculate the LMTD in the new system. इस केस में क्या चेंज हो रहा है? इस केस में LMTD चेंज हो रहा है। निकालो। Solve this. प्रीवियस क्वेश्चन में LMTD सेम था, इस क्वेश्चन में LMTD सेम नहीं है, so you can't cancel directly here. Okay, you can't cancel that terms directly here. चलो, तो यहाँ पे LMTD चेंज हो रहा है, इसका क्या मतलब है? देखो, क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, वो जा रहा है 100 से कितना जा रहा है? 80, और ये वाला जा रहा है 40 से 80। ओके, ये किसकी कंडीशन है? क्लीन की। फाउलिंग के बाद क्या होगा?
फाउलिंग के बाद होगा ये 80 नहीं जाएगा। 80 वाली लाइन कौन सी है? ये वाली। ये कहीं उससे ऊपर रहेगा, है ना, क्योंकि हिट ट्रांसफर ही नहीं हो पाया अच्छे से फाउलिंग की वजह से। और इस वाले में क्या होगा? 40 से 80 जा रहा था ये 80 के नीचे रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एलएमटीडी चेंज होगा, है ना। येलो किसके लिए दिखा रहा? फाउलिंग प्रोफाइल। ओके। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें न्यू एलएमटीडी निकालना पड़ेगा। तो इसको हम दे देते हैं TH TH2 TC2। ओके। क्वेश्चन में दिया है क्लीन वाला 50% से रिड्यूस हो गया, तो फाउलिंग इक्वल्स टू 0.5 टाइम्स ऑफ क्यूब क्लीन। देखो, assuming flow rate and the typical properties are same, ये आप लिख लेना आर सेम। सो यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू एम ऑफ हॉट इंटू सीपी ऑफ हॉट TH1 माइनस TH2 इक्वल्स टू एम ऑफ हॉट सीपी ऑफ हॉट। TH1 तो वही रहेगा, एग्जिट टेम्परेचर चेंज होगा TH2। सो एम एस सी पी एच सेम क्वेश्चन में मेंशन्ड है पहले। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 100 माइनस 80, इट इज इक्वल्स टू 100 माइनस TH2। सो TH2 इक्वल्स टू 90। Similarly, you can calculate TC2। कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो। TC2 इक्वल्स टू 60, है ना। सॉल्व करके देखो। MC
CPC TS2 dash minus TC1 0.5 80 minus 40 equals to TC2 dash minus 40 TC2 dash equals to 60 आ गया आ गया now you can calculate the new LMTD 100 will give you 90 40 will give you 60 so it is 40 it is 50 LMTD equals to 50 minus 40 ln of 50 by 40 equals to 44.8 आ गया समझ में done so what they have asked in the question is see calculate the LMTD in the new system so this is the LMTD in the new system again this is a great question okay okay now this is all about the LMTD method this is all about LMTD method now we have to introduce a new method that is Ntu method so if you see in LMTD method we are using mostly for the designing purpose when you have to design heat exchanger
we'll move towards LMTD method. So what is the basic difference between the LMTD and NTU method? I will tell you. This is LMTD, NTU method. TH1, TH2, TC1, TC2 area. So think which data is given in LMTD, and then I will tell you which data is given in NTU method. If you see this, in LMTD method, TH1 is given, TH2 is given, TC1 is given, so you can easily calculate the TC2. So that's why I'm saying it is given. If not given, you can easily calculate, but area is not given. In NTU method, TH1 is given, TH2 is not given, TC is given, TH2 is not given, area is given. So what is the difference then? The difference is that NTU method is used after some time. It is not used for designing. Means if you use it at time t equals to 0, your efficiency will be coming 100%. In NTU method, we calculate the efficiency of the heat exchanger. Why there is a change in the efficiency of the heat exchanger? Because there is a fouling in the system. You can calculate the efficiency by using the LMTD method also, but it will be very, very tedious. Okay, it will be very, very tedious. So that is why we can say, okay, that is why we can say at time t equals to 0, we will go with LMTD method. We want to do a designing. NTU method we will do after some time, means after fouling. What is the efficiency of heat exchanger? Because here TH2 and TC1 is not known. So we will calculate that TH1 and TC1, and from that we can calculate the efficiency of heat exchanger. So if it is 100%, then it is okay. Means fouling is not going to affect so much. But if it is coming very, very less, suppose 50%, it means there is a need for the changing, or you can say removing the fouling from the heat exchanger. Okay. So basically here in NTU method, what is going to happen? In NTU method, we need a area. And as you have designed the heat exchanger, so you know the area. So easily you can calculate the efficiency. Okay. So what is our task is Q should be max. This we know. CP and delta T. What is the unit of CP? Mass flow rate, you can say. CP with mass flow rate. Talking about CP, CP is joule per kg Kelvin. Means how much heat is required to raise the temperature by 1 degree Kelvin or 1 degree centigrade. Okay, joule energy per kg. So it means that which fluid have a higher CP value, more energy will be required to raise the temperature of that fluid. In that case, delta T will be less.
Means CP is going upward, it's okay, but delta T is going downward. Why? Because CP is how much energy is. Means if you compare 1 and 2 CP, so it means for 2 joule per kg energy is required to raise the temperature of 1 degree centigrade. But in fluid 1 joule per kg is required. So which is better? 1, na? If it has a low CP, then it will help to change the temperature, and that's what we want in the heat exchanger. है ना? Delta T should be high. So that is why our task will be decrease the value of CP. Decrease means we can't decrease it. You have to select such fluid which has a low CP. Because if CP is low, delta T will be high. So here you can say Qmax upon CP equals to delta T. So if you want more delta T, from this equation also you can see if you want more delta T, CP should be less. So this is the system. Means they are inversely proportional. CP should be less, delta T should be high. More temperature variation will be experienced by that fluid which have a low CP rather than which fluid has a high CP. So due to this, our main target will be Qmax equals to CP minimum, and maximum delta T will be TH1 minus TC1. This is the maximum delta T in the system, है ना? ये हमने देखा हुआ है. Okay. So what is effectiveness? Equals to Q actual upon Q maximum. Okay. So Q maximum equals to MCP minimum TH1 minus TC1. So effectiveness, if you calculate MCP minimum TH1 minus TH2, here actual will be TH1 minus TH2. So when you will apply this condition, when obviously hot should be minimum. So when MCP hot is less than MCP cold. MCP hot is less than MCP cold. Write this. Okay. So this is we have written for hot fluid. Similarly, you can write for cold fluid also. TC2 minus TC1 upon, because here this will be cancelled. Sorry, this. You can rub this. This is the required condition for using this equation. Okay. So here it is TH1 minus TC1. So this is for cold fluid. So when at this condition, MCP cold is less than MCP hot.
And if MCP cold is equals to MCP hot, then you can use any equation. So give it 1, give it 2, use 1 or 2. Write this. So what is the NTU formula? MCP minimum. So you have two formulas, Q equals to UA Lmtd, and TU equals to UA MCP minimum. Write this. Okay. So now it's totally depends upon the capacity ratio. MCP small uh, MCP small upon MCP large. So for parallel, 1 minus exponential minus NTU, it is 1 plus C. Exponential minus NTU, 1 minus C. So you have to remember this formula, okay? It's C. Depending upon C, we have to use the efficiency formula. So it is 1 minus C exponential minus NTU
1 minus C. So write this. Write this. So we should have to find the extreme points also if C equals to 0. If C equals to 0, it means MCP large is tending towards infinity. 1 by infinity is 0. That fluid will not experience any delta T. Counter equals to E of co-current. So here efficiency of parallel is equals to efficiency of counter equals to 1 minus exponential minus NTU, like this. So write this. So we want to see the extreme points. First we have seen C. C is 0. Now we will see C equals to 1. है ना 0 देख लिया अब हम C equals to 1 देखेंगे. So here it is MCP hot is equals to MCP cold. So efficiency of parallel is equals to 1 minus exponential minus twice of NTU upon 2. Efficiency of counter is equals to NTU 1 plus NTU. Please write it. After that, we will solve the question. Okay, write a question. An industrial gas CP equals to 1 kilojoule per kg Kelvin enters a parallel flow heat exchanger
at 250 degrees centigrade with a flow rate of 2 kg per second. To heat water stream, the water enters at 4 kilojoule per kg Kelvin. At 50 degrees centigrade. The flow rate of 1 kg per second. Efficiency is 0.75. Calculate the gas exit stream temperature. Zero point 0.75 equals to 250 minus TH2 upon 250 minus 50. 2H2 equals to 100 degrees centigrade. Directly you get the answer. In a parallel flow heat exchanger, steady state condition, the capacity of hot and cold fluid are equal. The hot fluid is flowing with 1 kg per second with specific heat capacity 4 kilojoule per kg Kelvin. Enter the heat exchanger at 102 degrees centigrade while the cold fluid has an inlet temperature of 15 degrees centigrade. U equals to 1 kilowatt per meter square.
area equals to 5 meters square. Calculate the exit temperature for the cold fluid. Solve करो. Here MCP hot is equals to MCP cold. We will calculate first NTU. UA MCP minimum 1000 into 5 to 1 into 4000 equals to 5 by 4. Efficiency of parallel equals to 1 minus e to the power minus 2 into 5 by 4 by 2 equals to 0.46. So efficiency equals to TC2 minus TC1 upon TH1 minus TC1. So TC2 equals to 55. So this is being asked in the gate.
Okay, done with this question. So here you can see that how we have calculated the efficiency NTU. From here we have calculated the NTU, and we know this formula when MCP hot is equals to MCP cold, है ना? तो पैरेलल हीट एक्सचेंजर गिवन है, वहां से हमने एफिशिएंसी निकाल ली. सो यहीं पे ये काम आता है. ओके, दिस NTU method will help in this. Okay, done. Okay, now we will see some designing part. Designing of heat exchange. डिजाइनिंग ऑफ हीट एक्सचेंजर्स में क्या है, देखो. डबल पाइप हीट एक्सचेंजर पहले हम देखते हैं. डबल पाइप, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर्स में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से हीट एक्सचेंज करते हैं. तो इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है, एक तो जो रेड वाला एरिया पूरा, हियर हीट ट्रांसफर इज नॉट टेकिंग प्लेस. उसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन. फिर ये यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा आसान है एज कम्पेयर टू शेल एंड ट्यूब एक्सचेंजर. दूसरा ये है, इसमें हमें एक लिमिट आ जाती है इसकी लेंथ बढ़ाने में. क्यों? क्योंकि ये एक ग्रीन वाला है, वो क्या कर रहा है, वो उसके ऊपर वेट दे रहा है. सो अगर ज्यादा वेट दे दिया उसने तो क्या हो जाएगा, स्लैग हो जाएगा इस तरह से. ओके, स्लैग हो जाएगा. सो दैट इज वाई हम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, जहाँ पे हमें हीट एक्सचेंजर्स की बहुत कम वैल्यू रहती है छोटे इंडस्ट्रीज में, ठीक है, जहाँ पे हम शेल एंड ट्यूब को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर. द ओनली ड्रॉबैक इज कि यहाँ पे क्या हो गया, हीट एक्सचेंजर पूरे सरफेस पे नहीं हो रहा. दूसरा, इसको पलटाते वक्त यहाँ पे लीक की प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, एक जो रहता है उसको बोलते हैं वन हेयर पिन. इट इज नोन एज वन हेयर पिन, मतलब एक पूरा सेक्शन. तो जितने ज्यादा हेयर पिन हम बढ़ाते जाएंगे उतने ज्यादा लीक की प्रॉब्लम इस सिस्टम के अंदर हो सकती है. ओके, उतना ज्यादा लीक की प्रॉब्लम इस सिस्टम के अंदर हो सकती है. ओके, सो लिख लो इसको. ओके, next we will see shell and tube heat exchanger, which is most widely used heat exchanger. शेल एंड ट्यूब, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत तो बात कर चुके हैं. देखो, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब किसी के कुछ एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो रहेंगे ही रहेंगे. ठीक है, ये ट्यूब्स है हमारे पैरेलल लाइंस. सो इन पैरेलल लाइंस के ट्यूब्स में हम क्या देते हैं, बैफल्स देते हैं. बैफल्स, बैफल्स का क्या काम है, व्हाट इज द वर्क ऑफ बैफल, टू गिव सपोर्ट टू द ट्यूब्स. ये तो इसका प्राइमरी काम है, मेन काम है, and to create turbulence in the shell.
और हमने देखा था टर्बुलेंस वाला जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। ओके, टर्बुलेंस फैक्टर इज सो मच डोमिनेटिंग एट दैट सेक्शन। से बहुत अच्छी बात है। लेकिन बैफल स्पेसिंग एक टर्म आती है। व्हाट इज बैफल स्पेसिंग? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बैफल्स। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बैफल्स। ओके, तो अगर हम बैफल स्पेस कम कर देते हैं तो मतलब बैफल बहुत पास पास लगे, बैफल स्पेसिंग जैसे हम कम कर देते हैं तो हमारी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ गई तो टर्बुलेंस बढ़ जाएगा, टर्बुलेंस बढ़ गया तो यू बढ़ जाएगा। लेकिन सेम टाइम प्रेशर ड्रॉप, है ना, प्रेशर ड्रॉप, सॉरी, बढ़ जाएगा। प्रेशर ड्रॉप बढ़ गया तो पंपिंग कॉस्ट भी हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पंपिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें डेल्टा पी, तो ये नेगेटिव चीज है ना, ये पूरी नेगेटिव चीज है। पंपिंग कॉस्ट बढ़ गया, लेकिन यू बढ़ रहा है, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। मतलब हम पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं, दैट इज बैफल स्पेसिंग। इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर बैफल स्पेसिंग अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। टर्बुलेंस डिक्रीज, यू डिक्रीज, डेल्टा पी भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। पंपिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे लिए क्या है? इधर पॉजिटिव थिंग है, लेकिन ये वाली हमारी नेगेटिव थिंग है। मतलब सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है? बैफल स्पेसिंग में। तो कितनी बैफल स्पेसिंग हमें प्रोवाइड करानी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर गलत बैफल स्पेसिंग हमने प्रोवाइड करा दी, क्योंकि तुम यू की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मार्केट से ज्यादा पैसा लोगे, है ना। अच्छा हीट एक्सचेंजर होगा तो मतलब तुम्हारी एनर्जी सेव हो रही है। एनर्जी सेव हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन वो एनर्जी कहाँ पे जा रही है? पंप को चलाने में जा रही है। डोमिनेट कौन कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। अगर पंप डोमिनेट करने लग गया तो फिर क्या ही फायदा है ना। पंप डोमिनेट करेगा कि पंपिंग में इतनी एनर्जी जा रही है, और वो यू को बढ़ाने के बाद जितनी एनर्जी बढ़ रही है उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा मार्केट में, तो ये तो नुकसान हो गया। तो जब एक पैरामीटर को चेंज करने की वजह से एक पैरामीटर पॉजिटिव होता है और एक पैरामीटर नेगेटिव होता है, तो क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन आता है बीच में, है ना। कि कितना ऑप्टिमाइज रखे, मतलब दोनों को साथ में लेके, दोनों को नाराज नहीं करना है, दोनों को साथ में लेके चलना है। ओके, तो इसकी जब बात आती है, ओके, यस, डेल्टा पी ज्यादा हो जाता है, यस, डेल्टा पी विल इंक्रीज, अहमद। ओके, डेल्टा पी विल इंक्रीज। ओके, लेकिन जब बैफल स्पेसिंग हम कम कर देंगे, कम कर दिया, बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया मतलब दूर दूर रख रहे हैं, है ना। सो उसमें क्या हो जाएगा? चेंज हो जाए। सो इसका जो ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू है, हम बोलते हैं मैक्सिमम, इट शुड बी इनर डायमीटर ऑफ द शेल, है ना। बैफल स्पेसिंग हम मैक्सिमम कितना रखेंगे? इनर डायमीटर ऑफ द शेल। मिनिमम 1/5 इनर डायमीटर ऑफ द शेल। सो ये ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू है ना। तुम्हें जब हीट एक्सचेंजर कर रहे हो यूज अपनी इंडस्ट्री के अंदर, सो डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारी प्रोडक्ट वैल्यू कितने से बढ़ रही है, ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है ना, क्योंकि यार दिक्कत आई, एक पैरामीटर को हिला रहे तो एक पॉजिटिव चीज हो रही है और एक नेगेटिव चीज हो रही है। तो जब भी एक पॉजिटिव चीज और नेगेटिव चीज होती है तब हम ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, दिस यू हैव सीन इन पीईडी इकोनॉमिक सेक्शन ऑल्सो, ऑप्टिमाइजेशन पे क्वेश्चन आते हैं। तो मैथमेटिकली ऑप्टिमाइज करना मतलब क्या है? मैथमेटिकली ऑप्टिमाइज करना मतलब कि किसी का भी मैक्सिमम और मिनिमा निकालना। सो मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट करके। तो ये तुम इकोनॉमिक्स में देखोगे। ओके, सो दिस इज गोइंग टू हैपन ड्यू टू बैफल स्पेसिंग। लिख लो।
देख लिया। चलो, इसके बाद आता है पिच। पिच क्या होता है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू ट्यूब्स। ओके, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू ट्यूब्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहली होती है हमारी रेक्टेंगुलर पिच। रेक्टेंगुलर पिच में क्या होता है, स्पेस बहुत है, ये देखो व्हाइट वाला एरिया। एक होता है हमारे पास ट्रायंगुलर पिच। इसमें क्या है, स्पेस कम है। तो स्पेस कम है तो तुम यहाँ से ये तो समझ ही सकते हो, यू विल बी मोर, डेल्टा पी विल बी मोर, डिफिकल्ट टू क्लीन, डिफिकल्ट टू क्लीन। और कम स्पेस में इसलिए ज्यादा ट्यूब्स भी आएगी, ट्यूब विल बी मोर। यहाँ पे यू विल बी लेस, डेल्टा पी विल बी लेस, बट इसका सबसे अच्छी बात क्या है, क्लीनिंग इज इजी। सो ये डिपेंड करके अब है ना, कौन सा फ्लूइड हम कहाँ पे यूज करेंगे, है ना, कौन सा फ्लूइड यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से। एंड ट्यूब विल बी लेस, नंबर ऑफ ट्यूब्स विल बी लेस। सो डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन, कौन सा फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत सॉलिड पार्टिकल्स है, प्रेसिपिटेट ज्यादा है, तो क्लीनिंग डिफिकल्ट हो जाएगी हमारी ट्रायंगुलर पिच में, है ना। सो अल्टीमेटली क्या होता है, फाइनल तुम्हारा ये है कि इंडस्ट्री को फायदा होना चाहिए, है ना। तुम ट्रायंगुलर यूज करो कि रेक्टेंगुलर, इट डजंट इफेक्ट, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये यूज करूंगा तो किस पैरामीटर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ये वाला यूज करूंगा तो किस पैरामीटर्स के ऊपर इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये होगा। सो टर्बुलेंस अच्छा हो जाएगा ट्रायंगुलर पिच में तो अच्छी बात है, लेकिन वही हो जाएगा फिर तो डिफिकल्टी हो जाएगी, है ना। सो इसका शेल साइड अगर हम देखें, है ना, ट्रायंगुलर पिच, इसका डी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा हमको। क्या होता है डी इक्विवेलेंट, 4 इंटू हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, फ्लो एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। वेटेड पैरामीटर, है ना। सो 4 इंटू फ्लो एरिया। फ्लो एरिया क्या होगा भाई इसका, बता दो, ट्रायंगल, है ना। फ्लो एरिया क्या है, ट्रायंगल, 1/2। लेकिन कितने एंगल पे है, ये 60 डिग्री पे है। 1/2 √3/2, इस डिस्टेंस को ले लो पीटी, हाफ बी इंटू एच। तो ये क्या हो जाएगा, पीटी स्क्वायर, माइनस ये 60 का एंगल है, तो 60 × 3 कितना हो जाता है, 180। मतलब हाफ सर्कल का एरिया में से फ्लो नहीं हो रहा है, सो माइनस कितना हो जाएगा, π/4 डी स्क्वायर, हाफ करना है तो 1/2, है ना। ये किसका एरिया हो गया, ट्राइंगल का। √3/2 क्यों आया, sin 60 भाई, है ना, sin 60 आएगा ना, sin 60 विल कम क्योंकि एंगल पे है वो। ठीक है, तो ये ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में से हाफ सर्कल हमने माइनस कर दिया अपॉन वेटेड पैरामीटर। वेटेड पैरामीटर मतलब सर्कल कितना कांटेक्ट में है, हाफ, पाई डी पूरा होता है ना, पाई डी पूरा सर्कल का पेरीमीटर है, लेकिन वो हाफ है इसलिए π/d/2। सो दिस इज डी इक्विवेलेंट। सिमिलरली यू कैन, अच्छा ये लिख लो पहले, फिर मैं रेक्टेंगल का कराता हूँ, या फिर तुम एक अटेम्प्ट मार सकते हो। अटेम्प्ट करो।
डिजाइनिंग क्वेश्चन गेट में नहीं रहते, इंटरव्यूज में रहते हैं। ओके, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं अपन अभी। रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी है। सो फॉर्मूला लगा, डी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4 इंटू हाइड्रोलिक रेडियस 4 इंटू फ्लो एरिया। फ्लो एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया, पीटी स्क्वायर, या स्क्वायर जो भी लेना है, ठीक है। अगर सेम है तो पीटी स्क्वायर, नहीं तो पीटी 1 इंटू पीटी 2 माइनस कितने डिग्री पे, ये 45 पे सबको काट रहा है, तो 45 इंटू 4 कितना होता है, कितना होगा, सॉरी 90 पे काट रहा है, 90 पे, है ना। 25% सर्कल, 25% सर्कल, 25 25, तो पूरा मिलके एक सर्कल ही बन गया। सो इट विल बी पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, है ना, अपॉन पूरा सर्कल ही है वेटेड पैरामीटर, सो पाई डी। सो दिस इज डी इक्विवेलेंट। ओके, 4 इंटू, हर जगह पर 25% सर्कल को काट रहा है ना, सो 4 इंटू 25 कितना हो गया, 100% सर्कल ही बन गया। ओके, लिख लो इसको। गलती से बोल दिया अहमद, इट इज नॉट 45, ओके, 19 है। 45 पे तो आड़ी लाइन होती है ना, दिस इज 45। ओके, बाय मिस्टेक आई हैव टोल्ड 45। ओके, ये वाली लाइन क्या होती है, 90 होती है परपेंडिकुलर। सो नंबर ऑफ ट्यूब्स इक्वल्स टू इंटरनल डायमीटर ऑफ शेल अपॉन पीटी। लिख लो इसको। Yes, 360 is 100% circle. Okay. Done.
Okay. Now we will see the selection of a fluid. फ्लूइड को कैसे सिलेक्ट करें? ओके, सो फ्लूइड को सिलेक्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, ओके, फ्लूइड को सिलेक्ट करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट वो बात है वो है कि महंगा कौन है, शेल महंगा है कि ट्यूब महंगा है। सो ये याद रखना, ये कॉन्सेप्ट याद रखोगे सो यू कैन इजीली गिव द आंसर। ओके, सो कौन महंगा रहेगा, डायग्राम से थोड़ा सा गेस भी कर सकते हो तुम। ये ट्यूब्स है और शेल क्या है, आउटर कवरेज पूरा उसका। सो हु विल बी कॉस्टलियर? शेल, यस वेरी गुड, शेल इज कॉस्टलियर। अप्रोक्सीमेटली उसकी कॉस्ट बोलते हैं डायमीटर के 4 गुना होती है, डायमीटर ऑफ शेल के। ठीक है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, याद रख सकते हो नहीं तो ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग, अब शेल महंगा है तो हमारा टास्क क्या रहेगा, बीइंग इंजीनियर हमारा टास्क रहेगा शेल को बचाओ भाई पहले, क्योंकि ट्यूब तो सस्ता है ना, तो सस्ते को हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो मुझे बताओ हाई फाउलिंग, हाई फाउलिंग कहा जाएगा, करोजिव, कहा जाएंगे ये दोनों फ्लूइड कहाँ जाएंगे? वेयर इट विल गो, गिव मी आंसर। ऑब्वियसली ये दोनों को कहा देंगे हम, ट्यूब्स में, है ना, क्योंकि शेल महंगा है ना। तो अगर फाउलिंग हो गई, करोजिव हो गया, तो फिर शेल को चेंज करना बहुत ज्यादा कॉस्टली है ना, शेल को चेंज करना बहुत ज्यादा कॉस्टली है। सो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ट्यूब्स, है ना। हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में याद रखना, हाई प्रेशर में क्या होगा, कहाँ पे प्रेशर मेंटेन करना आसान होता है, एक छोटे जगह में कि एक बड़े जगह में? ठीक है, एक चीज है रटना, ठीक है, एक है कि कंसेप्चुअली याद रखो, है ना। वेयर इट विल बी इजी टू क्रिएट हाई प्रेशर, वेयर इट विल बी इजी, इन अ स्मॉल पाइप और बिगर पाइप, वेयर इट विल बी इजियर, मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर को मेंटेन करना है तो कहाँ पे इजी होगा? वेयर इट विल बी इजी, ऑब्वियसली दे इन द ट्यूब साइड, क्योंकि ट्यूब साइड का एरिया कम है ना, ट्यूब साइड का एरिया कम है ना, ट्यूब साइड का एरिया कम है, ये देखो ना, एक बड़ा, यहाँ पे तुम एक 40 किलो पास्कल से सपोज कुछ तो डाल दिया, सपोज करो, तो ये क्या इतना एरिया ज्यादा है तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ना, है ना। जो रिक्वायर्ड प्रेशर पे चलाने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ओके, रिक्वायर्ड प्रेशर की चलाने की बात कर रहा हूँ, है ना। सो शेल साइड में अगर, शेल साइड में अगर अपन ने हाई प्रेशर फ्लूइड को डाल दिए तो वो क्या हो जाएगा, शेल साइड में डाल दिए तो हमें उस शेल के हिसाब से प्रेशर को डिजाइन करना पड़ेगा, और वो शेल का पाइप का डायमीटर कितना ज्यादा है ना, शेल के पाइप का डायमीटर कितना ज्यादा है, तो वो इतना ज्यादा है तो उसके रिक्वायरमेंट का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होगा, है ना, उसके रिक्वायरमेंट का जो प्रेशर है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। दैट इज व्हाई वी हैव टू प्रेफर अ हाई प्रेशर फ्लूइड ट्यूब। अब शेल साइड में क्या जाएगा फिर, शेल साइड में हमारा जाएगा हाई विस्कोसिटी फ्लूइड, है ना। क्यों? क्योंकि अगर इसको ट्यूब साइड में डाल देंगे फिर फ्लूइड हमारा ये हो जाएगा, है ना, फ्लो नहीं हो पाएगा अच्छे से, या फिर लो फ्लो रेट है, लो फ्लो रेट है,
क्योंकि ट्यूब के अंदर अगर हमने हाई विस्कोसिटी फ्लूइड को डाल दिया तो वो अच्छे से मूव नहीं हो पाएगा, है ना। वो अच्छे से मूव नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो आसानी से मूव नहीं हो पाएगा। शेल में क्या, हमने शेल में पूरा फ्लूइड डंप कर दिया और वो वहां पे हीट एक्सचेंज करता रहेगा। ठीक है। सो ये थंब रूल से याद करना। तो ऐसा नहीं है कि ये थंब रूल चेंज नहीं होते। सपोज कभी ऐसा आ गया, हाई प्रेशर, एक फ्लूइड है वो तुम्हारा हाई प्रेशर है और दूसरा फ्लूइड है वो करोसिव है। ओके, इफ दिस कंडीशन विल कम, हाई प्रेशर एंड करोसिव। अब थंब रूल तो ये बोल रहा है कि दोनों को ट्यूब साइड में डालो, लेकिन ये तो दो अलग अलग फ्लूइड है, तो किसी को तो शेल में डालना पड़ेगा। तो एट दैट टाइम वी विल टेक अ रिस्क एंड करोसिव फ्लूइड को हम कहाँ डालेंगे, शेल साइड में। प्रेफरेंस इज ऑलवेज गिवन टू हाई प्रेशर, है ना, क्योंकि वो जो प्रेशराइज फ्लूइड है वो कहीं ना कहीं के लिए आउटलेट है, वो किसी ना किसी चीज का क्या है, रिएक्टेंट है, तो हमें वो प्रेशर मेंटेन करके रखना है। ओके, कभी कभी हर चीज इससे नहीं होती है ना, कि हमें शेल को ही बचाना है। ठीक है। सो ये सिलेक्ट किया तुमने हाई प्रेशर को करोसिव के ऊपर, ये क्या है, ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर आ गया ये, है ना। अब उस हाई प्रेशर को मेंटेन करके तुम कितना पैसा कमा रहे हो, और करोसिव फ्लूइड को शेल में डाल के शेल डैमेज हो जाएगा तो कितना, तो फिर वहां पे हम ऑब्वियसली एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेंगे, लाइनिंग कराएंगे, शेल को थोड़ा प्रोटेक्शन कराएंगे। वो सारी चीजें बात की बात है। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना, हाई प्रेशर विल बी गिवन प्रेफरेंस। ओके, हाई प्रेशर विल बी गिवन प्रेफरेंस। आगे समझ में, लिख लो इस सब चीजों को। राइट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, बैफल्स अलग अलग तरह के होते हैं, तो फिर डिजाइनिंग इतना छोटा तो है नहीं कि 1 घंटे में डिजाइनिंग हो जाएगा। डिजाइनिंग इज अ वास्ट टॉपिक, है ना। सो वो एक्चुअली गेट के सिलेबस में नहीं है। कर्न मेथड यूज करते हैं हम डिजाइनिंग के लिए, ये याद रखना। ठीक है, वी यूज कर्न मेथड। बैफल्स तो एक होता है सेगमेंटेड बैफल्स, बहुत सारी चीजें डिजाइनिंग में ना, इतना आसानी से नहीं बनता है हीट एक्सचेंजर्स। सेगमेंटेड बैफल्स मतलब इस तरह से रहते हैं। ठीक है, सभी इस तरह से रख देते हैं। ये वाला तो हमने देख ही लिया। कभी कभी इस तरह से रख देते हैं। तो बैफल्स, ये सब बैफल्स है। ठीक है, तो बैफल्स का मेन काम ही यही है, दैट वी हैव टू, ओके, वी हैव टू क्रिएट द मेन टर्बुलेंस इन द सिस्टम। टर्बुलेंस एक बार क्रिएट हो गया हो गया, लेकिन हमेशा याद रखना वहां पे एक प्रेशर ड्रॉप वाला जो टर्म है वो गड़बड़ करता है, तो उसके बारे में सोचना है तुम्हें, है ना। उसके बारे में सोचना है डिजाइनिंग करते वक्त। ओके, डन। डाउट है किसी को कुछ, यू कैन आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। So here we complete the heat exchanger.
नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इवापोरेटर्स, कंडेंसेशन, छोटे छोटे टॉपिक्स है, ठीक है, एंड रेडिएशन।